wish you all a very happy Republic Day and happy Vasant Panchami. May Ma Saraswati bless you all. दिशा, जिसका उद्देश्य ही है छात्र को सही दिशा दिखाकर उनका मार्गदर्शन करना, जिससे वे अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को देखे ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी कर सके. Now, I would like to address our principal sir, Professor Shiv Kumar Sahdev, whose guidance and support always help the society in all its endeavors. Because of some further commitments, he is unable to join with us today, but his blessings are always with us. Now, I would also like to address our another pillar of strength, Professor Darshan Kumar Pandey sir, who is our convener, to kindly felicitate our today's chief guest and our former Co-Secretary of India, Mr. Anil Swarup sir. Thank you, sir, and over to you. नमस्कार आशी, धन्यवाद. आप सबको नमस्कार. और हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता और अतिथि आदरणीय श्री अनिल स्वरूप जी का विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं पूरे शिवाजी कॉलेज परिवार की तरफ से, प्राचार्य की तरफ से और पूरी दिशा समिति की तरफ से. और आप सब जो भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं आप सब की तरफ से हमारे सम्माननीय आदरणीय अनिल स्वरूप जी का स्वागत करता हूं. अनिल स्वरूप जी के बारे में अभी हमने परिचय प्राप्त किया है. उनका पूरा अनुभव रहा है पूरे जीवन काल का, और उस अनुभव का लाभ हमें आज अवश्य मिलेगा. आज एक विशेष अवसर है, गणतंत्र दिवस भी है और बसंत पंचमी भी है. तो सरस्वती पूजन का दिन है, गणतंत्र दिवस है, यह अद्भुत संयोग है. तो ज्ञान की बात भी होगी और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आप लोगों को आज जानकारी हमारे आदरणीय वक्ता जो है वो देंगे. तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बस आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिशा समिति निश्चित रूप से बहुत ही सक्रियता के साथ काम कर रही है और पूरे वर्ष भर ऑफलाइन कार्यक्रम हो या ऑनलाइन कार्यक्रम हो, दोनों ही पटल पर आप सब दिशा सोसाइटी के जो सदस्य हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो लगातार सक्रिय रहते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा काम दिशा समिति के द्वारा किया जा रहा है. तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं. और आप सब जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं. आप सबको बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हमारे अतिथि वक्ता आदरणीय अनिल स्वरूप जी का मैं पुनः हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. Now, without spending much time, I am pleased to hand over the platform to our speaker for the day, our former Co-Secretary of India and a retired IAS officer, Mr. Anil Swarup sir. Now, sir will proceed this further and will discuss more about today's topic, how to kickstart the preparation for UPSC exam. Over to you, sir. A very good morning to all of you and a very, very happy Republic Day to all of you. Before I proceed further, can I request those that are here to open the videos? You know, I'm not a professional speaker. I'm not an Amitabh Bachchan to speak to a camera. It is always better if I have some faces in front of me so that I know whatever I'm talking is making some sense to you or not. So I'm assuming that though it's a holiday, many of you would have been reasonably well dressed to open your cameras. And the reason is that if you can't face me through your camera, how will you face the civil service interview board? So can I request those of you can and have the courage to open your videos? Thank you very much. I'm so glad some of you had shown the courage to open your videos. Others still prefer to remain, as we call in UP, a parda nashi, behind the curtain. So today what I will try and tell you is, how do you prepare yourself for the civil service? But before I do that, the contention is very simple. If you can't evolve as an individual to be reckoned with, first of all, it will be very difficult for you to qualify for the civil service. And by your effort and by God's grace, if you do qualify for the civil service, if you don't evolve as an individual to be reckoned with, you will be a failure in civil service. And that would be even more frustrating than not getting into civil service, because I've seen a lot of civil servants feeling extremely frustrated within the civil service because they have not evolved as an individual. So first part of my presentation would be how to evolve as an individual to be reckoned with, and then more specifically, what you can and should do to become a civil servant. Both are very, very important. I don't know how many of you have read my book, Ethical Dilemmas of a Civil Servant. In that book, I begin with a couplet which states,
मुख्तसर सी जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, यहां तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं. That is the quintessential dilemma of a civil servant. You get into a service and you come across a number of problems that afflict the society, afflict the administration, and you are tasked with sorting them out. How do you do that? Whether as a student or as a civil servant, all of us face problems. I don't think there's anybody who doesn't face a problem. The question is, how do you approach a problem? More often than not, our approach is to assign the responsibility of that problem to somebody else. उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना मलता रहा. This is not a share of Ghalib, but it's a very famous couplet which actually indicates that it is our tendency to blame somebody else for our problems. Now, there could be situations where others may be responsible for your problems, but if you merely state that it is somebody else's responsibility, then your role ceases and you will continue with that problem. Your job should be to see how you can resolve the problem yourself. And for that purpose, you have to evolve as an individual to be reckoned with. खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. The question therefore is, how do I evolve as an individual to be reckoned with? And if you can evolve as an individual, then not only would you find it easy to get into the civil service, once you get into the civil service, you'll find it much easier than others who are not evolved individuals. So I will now attempt to answer, how do you evolve as an individual to be reckoned with? First point that you should remember, and very clearly remember, that you have absolutely no control over results. This is extremely important for anything while you prepare for the civil service or even otherwise. We all say karmanne vadikaraste ma phaleshu kadachana, but we don't actually believe in it. Either we don't understand it. You know, when I was a youngster, when I was a kid, in my younger days, till class 7, I did not win a single prize, a single certificate, a single cup, a single medal. I didn't win anything. And I used to feel very frustrated at that point in time. So my mother used to tell me, "Kyun pareshan hote ho? Tumhara samay aayega." And I never understood what she said then. Thereafter, she used to say, "Karmanne vadikaraste ma phaleshu kadachana." मुझे समझ में नहीं आता था उस समय उसका मतलब क्या है. Much later in life, I realized that I have absolutely no control over the results. The only control that I have is over what I can do now. Results are not in my hand. And that gave me a lot of peace of mind, because then I started focusing not on the result, but on my own action, my own karma. And over a period of time, it got reinforced. And during the course of my career, I discovered that by focusing on my karma, I got the due rewards. Let me give you a couple of examples in this. When I became a subdivision magistrate in a district called Hardoi. Anybody from UP here? You can raise your hand if you are. Okay, I can see Deepchand from UP. Others are not from UP, but probably sitting here in Delhi, you would understand what UP is all about. I was posted as subdivision magistrate in a district called Hardoi, which is close to Lucknow. It's a very criminal district. And this was my first posting. After my training in 83, I got posted here. In the year 84, Mrs. Indira Gandhi was assassinated. And all hell broke loose thereafter. You know, members of the ruling party were burning shops and indulging in arsons with regard to certain members of the minority community. It was a very serious situation. So as subdivisional magistrate in charge of law and order in the subdivision, I used to go around the city and make them feel secure and ensure that arson does not take place. As I was doing that, I got some intelligence which informed me that a very powerful MLA of this district was behind all these arsons and looting. So I was in a bit of a dilemma. He was so powerful that people would not raise their voice in front of him. Very powerful MLA. Now the question was whether I should take action against him or not. I took action against him. Not really directly. I made out a National Security Act case against him and sent to the district magistrate. Now it was unheard of, people taking action against this very powerful MLA. Now this MLA got the wind of this proposal of mine that was sent to the district magistrate. He went to Lucknow, the state headquarters, and spoke to someone. I don't know who did he speak to, but he did. Now, I was summoned to Lucknow, and I was asked to explain my conduct before a very senior officer. I was a bit upset. I said,
I have done the right thing. This guy is engaged in indulging in looting and arson and creating law and order problem. I have taken this action against him because he deserved that. But I was asked to explain. So I explained. When I explained my conduct to the concerned officer, he appeared to be satisfied with my explanation. But what he said thereafter surprised me. He asked me to withdraw the file. Now, I could have withdrawn the file. I mean, it's not that files are not withdrawn in government, they would have. But at that point in time, I told him, sir, the decision to impose National Security Act against an individual rests with the district magistrate, and I have sent the file to him. He can reject my proposal. So why are you asking me to withdraw the file? He said, nahi, tumhare hit mein hai, tum wapis le lo file. I declined. I did not take the file back. I came back to the district and I was transferred out. I was shocked because I thought I had done the right thing and I was being unnecessarily penalized for doing the right thing. I was pretty distraught at that point in time. Now fast track this to another 7 years when I myself became a district magistrate in a district called Lakhimpur Kheri. Now here, during those days, the Babri Masjid agitation was going on and the situation in the was pretty tense. So, though fortunately in the district, everything was peaceful on account of the reputation that I enjoyed as a no-nonsense officer, people used to believe that anyone who did wrong would be put behind the bars by the district magistrate. So by and large, it was very peaceful. But unfortunately, a murder took place. A murder happened. And as a consequence of this murder, the district president of the ruling party decided to take out a funeral procession. Now, I was aware that if funeral procession was taken out, there would be crisis in the district. There will be communal riots. So I tried to persuade that gentleman I tried to dissuade him from taking out that procession, but he didn't agree. He insisted. Now, again, the dilemma was here was a powerful local leader, district president of the ruling party, but I decided to arrest him. I arrested him and put him behind the bars. And I told my wife that going by my past experience, I should be transferred out. Late in the evening, the chief minister rang me up and he asked me, DM साहब आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया. मैंने कहा हाँ साहब बंद किया है. क्यों किया? So I explained to him. He said उनको छोड़ नहीं सकते. मैंने कहा साहब उनको छोड़ेंगे तो यहाँ जिले में बवाल होगा, यहाँ पे मारकाट होगी, यहाँ कम्युनल राइट्स होंगे और छोड़ना मेरे विचार से उचित नहीं होगा. Then he said कोई तरीका निकालिए उनको छोड़ने का. Then I told him, sir, best would be कि आप या कोई व्यक्ति लखनऊ से उनसे चर्चा करे और उनको बताए कि ये प्रशासन के हित में नहीं है कि वो funeral procession निकालें. But he didn't appear very satisfied. He put the phone down, or I should say banged the phone down. So I told my wife again that now we should be ready for a transfer. However, next morning, I got a phone call informing me that that gentleman, the district president, has agreed not to take out a funeral procession. I don't know what happened. Perhaps somebody from Lucknow had spoken to him. So I released him from the jail because I had nothing personal against him. But this was not the end of the story. 2 months down the line, the same chief minister who appeared to have been annoyed with me for arresting his district president awarded me as one of the best district magistrates in the state. Now here, I gave you these 2 examples just to explain to you that the results are not in your hand. In one case, I just moved a file to somebody and I was transferred out. In this case, I had actually arrested somebody and I was awarded. I did what I thought was right in both the cases. In one cases, I got a good award. In other cases, not. As you go on to prepare for your civil service, if you enjoy your journey for preparation, if you focus on what you can do, the chances are that you will be able to make it. But if you're obsessed with results, then you will be too hassled about the result and you will not be able to either enjoy your journey, and the preparatory time, you will treat it as a burden on your head. So this is very important that you should focus on the present now. Tell me, so many of you are listening to me. I see the number is around 92. How many of you can change your past? Any nods? Yes, no? Anybody can change your past? Ashi, Yes, sir. Manta, none of us can change the past. But look at the time that we spent brooding over the past, living in the past. Right now, many in the country, in our own country, are trying to change the past. They aren't changing the past, they're trying to change the history books. So much time and effort is going to change in the past.
whereas that time could be used in the present to build your present. My friends, your future will be determined by the blocks that you're going to prepare now. So focus on now. Enjoy the moments that you are in. Past is dead and gone. Future, you're not aware what's going to happen, but present is in your control. If you can enjoy that present, if you can learn during the present, if you can utilize that time, then the chances are that your future will be made. But brooding over the past, what has happened, will not help you. The third point that I'd like to mention to you is, and it's a very important one, that all of us suffer from lack of confidence because we apprehend that we may commit a mistake. हमसे कोई गलती ना हो जाए. होता है नहीं आपके साथ कि आप बोलते नहीं, चुप रहते हैं कि अगर गलती होगी तो क्या होगा, लोग हंसेंगे. कई बार, since I address people like you, I in thousands, almost every day, I address them, and all of them lack that confidence because they apprehend. उनको डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए. Most of us do not realize that everyone has committed a mistake at some point in time. आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी गलती ना की हो? सबने की है गलती. Everyone does a mistake. So committing mistake is very natural. It is natural to human being. And fear of committing mistake or fear of failure. Are you aware of anybody who hasn't failed in life? Whether it was Mahatma Gandhi, whether it was Martin Luther King, whether it was Jawaharlal Nehru, everyone has had failures in his life. Everyone. But we apprehend failure. हमें डर लगता है कि फेल ना हो जाए, इसलिए हम अगला कदम नहीं उठाते. Now you must listen to this carefully, that since everyone commits a mistake, successful people are those that learn from their mistakes. They don't live in their mistakes. They don't live in their failures. Let me give you another example from my student career. When I did my class 12, I had done that from science side, physics, chemistry, and maths. How many of you are from science discipline? Hands. Can I? Okay. Deep Chand seems to be agreeing with everything, raising his hand, which is wonderful. So in science, I remember in class 12, we were so focused on sine square theta plus cos square theta is equal to 1 that we didn't have time to improve on our language. So the focus on language was not there. So when I switched over to humanities in BA in Allahabad University, I was so bad at speaking and writing that I couldn't write 5 sentences in English or Hindi properly, or speak in English or Hindi properly those 5 sentences. You must be wondering, I'm speaking so fluently now, I can speak fluently in Hindi as well, but it was through practice. So when I realized, I developed my own skills over a period of time. There's a full video on that, on how to improve communication skills. I improved my communication skills after being totally disastrous before that. I improved my communication skills. That improved my confidence also. So I became a debater for Allahabad University, and from my hostel, I represented the hostel at the IIT Kanpur National Festival. One day before the debating competition, there was this music competition. So I thought I can sing also very well. आप लोग भी गाते होंगे, आप में से कौन लोग गाता है? गाते वाते नहीं आप? कोई नहीं गा. दीपचंद कहाँ चले गए? दीपचंद तो हाथ उठाते थे. अच्छा, he's gone somewhere. Okay. आप लोग अपना वीडियो खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं, बंद कर देते हैं. तो मैं ठीक से देख नहीं पाता हूँ आप लोग. ओके, तो मैंने सोचा मैं गाना भी अच्छा गा लेता हूँ. एक दिन पहले डिबेटिंग से म्यूजिक कंपटीशन था. मैं गया, वहां गाना शुरू किया. मैंने, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैंने गाना शुरू किया. गलत सुर पकड़ लिया. 15 सेकंड के अंदर 1000 स्ट्रॉन्ग क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू booed me out of the stage. They just booed me out. आप लोगों के साथ कभी ऐसा वाकया हुआ है कि आपको किसी ने बू करके बाहर कर दिया? सोचिए क्या हालत हुई होगी मेरी. जब बाहर निकल के आया तो मैंने कहा अगले दिन मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बिकॉज आई वाज सो distraught. I was totally shattered. So one of my seniors came to me and he said, यार ये बताओ, ये जो हो गया इसका तुम कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले अरे तुम तानसेन बन के वहां चले गए बिना प्रैक्टिस किए हुए, तुम सोचते थे हर जगह जीत जाओगे. अरे भाई प्रैक्टिस करते तो करते, तुमने गलती की, अब उस गलती पे चिपके रहोगे या बाहर निकलोगे? तुमने जो गलती की उससे सीखो, क्या गलती की आगे मत करना, तैयार होके जाओ जहां भी जाओ. लेकिन अब उसी गलती में चिपके रहोगे और जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, फोर्टे है, डिबेट है अगले दिन, वो तुम नहीं करोगे. ये कहां की लॉजिक है? सो आफ्टर अ डिस्कशन फॉर 1 hour, I got convinced, and next day I decided to participate in the debate. And when my name was announced, Anil Swarup, सब जितने ऑडियंस थे चीखने लगे, ये देखिए गायक आ गया. They thought the same person who had committed a crisis yesterday has come again.
But I went there, I had overcome my fears, and I spoke. I won the first prize in the national debating competition, despite the failure on the previous day. Now, my friends, why am I telling you all this? I'm telling you all this is you will fail. You will commit mistakes. Everyone does. But don't commit the same mistake again. Learn from those mistakes. Learn from those failures. Analyze why you failed. If you do that, the chances are that you'll succeed not only in the civil service exam, but in life itself. Hence, it is important for you to understand the importance of a mistake, importance of a failure. They should and they can become stepping stones to success. मैं इतना ज्ञान आपको बांट रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपके अनुभव से आपको बताऊं, लेकिन आप लोग अपना वीडियो ही नहीं खोल रहे, बंद कर रखा है आपने. 4-5 लोगों ने खोल रखा है. Shreya Mishra, probably she's not. Tushar, wonderful. You're standing, you feeling so cold, and yet you have opened the video. I'm so thankful to you. So Shreya refuses to open her video because for some reason she remained. My friends, if you are unable to face me, show yourself. I wonder how will you become a civil servant. I really wonder how you become a civil servant. By merely joining a speech by Mr. Anil Swarup will not help you. You have to know where you stand. Okay? आपको अपने आप का चेहरा दिखाएंगे, देखेंगे नहीं तो फिर सुधार कैसे होगा आपके चेहरे में? Okay, let me continue irrespective of whether you are listening to me or not, or you are visible or not, because I had committed to you all that I'll speak for some time and take your questions. I'm doing that. The next point which is important you should remember is that we spend a lot of time over issues over which we have no control. कितना आप परेशान रहते हैं उन विषयों के बारे में जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता. अरे यार, धोनी ने अगर वो शॉट खेल दिया होता तो इंडिया जीत जाती. आपको पता नहीं धोनी खेले ना खेले, जीत हार वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन परेशान कितना रहते हैं. मैं भी पहले कई ऐसी चीजों के लिए परेशान रहता था जिसपे मेरा कोई नियंत्रण नहीं था. मैं, आप लोग मालूम नहीं है, दिल्ली में अक्सर ट्रैफिक जैम हो जाता है. अब तो मैं परेशान नहीं होता. जब मैं पहले, मेरा खून खौलने लगता था जब अपने बाल नोचता. अब तो कम है मेरे बाल, लेकिन पहले बाल काफी थे. नोचता था मैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना ट्रैफिक जैम. आप लोग होते हैं परेशान ट्रैफिक जैम में? नहीं होते. देखिए, सब हम परेशान होते हैं. हम और आप कुछ कर थोड़ी ना सकते उस ट्रैफिक जैम में. कर सकते हैं, लेकिन परेशान बहुत होते. एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ जा रही थी, तो ट्रैफिक जैम में मैं फंस गया. मैं फिर चीखने लगा, क्या है. मेरी पत्नी बोली, तुम इसका कुछ कर सकते हो ट्रैफिक जैम का. मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ. अरे जब कुछ कर नहीं सकते अपना खून क्यों खौला रहे हो. वेरी सेमिनल पॉइंट कि कई बार हम समय 2-3 चीज के लिए ऐसा बर्बाद करते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है. पहला बर्बाद करते हैं जो हो गया उसके बारे में चिंता करते हैं. जिसका पास्ट हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हो गया. और दूसरा, जो आज हो रहा है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते उसमें चिंता करते हैं. आईएएस में आने से पूर्व मैं पुलिस सर्विस में था. तो पुलिस सर्विस की हमारी ट्रेनिंग चल रही थी हैदराबाद में. मेरे एक साथी थे, वो भी पुलिस सर्विस में थे. वो आए मेरे पास और कहने लगे, बॉस रात को नींद नहीं आ रही. मैंने, क्या हो गया. बोले, बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं. मैंने कहा, हाँ पेट्रोलियम के दाम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम के दाम क्या तुम्हारे रात को ना सोने से नीचे आ जाएंगे. बोले, नहीं बॉस, देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है. तो मैंने कहा, यार वो सब ठीक है, समझ में आता है. तुम अपना समय उस चीज में लगाओ जिसके लिए तुम कुछ कर सकते हो. अगर तुम्हारे रात को ना सोने से आर्थिक स्थिति सुधर जाए देश की, या पेट्रोलियम दाम कम हो जाए तो मत सो. लेकिन जब जिससे तुम्हारा कुछ नहीं होना उसके लिए तुम रात को नहीं सोगे तो दिन में तुम्हें नींद आएगी. फिर नींद आएगी तो दिन में तुम्हें फिर जो काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे. तो सहमत हुआ. बोले, हाँ यार, मेरे रात को ना सोने से तो फर्क पड़ेगा नहीं. चला गया. 3 महीने बाद फिर आए मेरे पास, कहता, बॉस रात को नींद नहीं आ रही. मैंने कहा, अब क्या हो गया यार, अब तो पेट्रोलियम के दाम अपने आप कम हो गए बिना तुम्हारे इंटरवेंशन के. नहीं बॉस, देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. मैंने उसका, यार रात को सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आप उन चीजों के लिए अनावश्यक रूप से अपना समय जाया ना करें, बर्बाद ना करें, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है. अगर आप ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आप करेंगे तो शायद आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकेंगे. आप तैयारी में और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. अब ये रही बात सामान्य जो मैं आपसे करना चाह रहा था. अब संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? जिनको मैं देख रहा हूं अपना हाथ खड़ा करेंगे. सो मैं अंग्रेजी में बोलूं
ठीक रहेगा सबके लिए, या मैं हिंदी में बोलूं, आप बताइए, या मिक्सचर बोलूं? देखिए वनिष्का गोयल ने अपना हिंदी में भी सर, तैयारी कर रहा हूं, बाइलिंगुअल सर बेटर है, bilingual better है. So what I will try and do is I'll explain to you what you need to do. So for the civil service, there are two important things that you should keep in mind. One is acquisition of knowledge, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, knowledge ज्ञान, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, अभिव्यक्ति, संवाद. क्योंकि आप केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और आप लिखने में सक्षम नहीं होंगे, if you are unable to write what you have here, UPSC will not give you marks on what you have here. But if you don't have anything here, then what will you write? So both knowledge यानी कि ज्ञान and expression, communication skills यानी कि संवाद, अभिव्यक्ति, both are extremely important. अब इन दोनों की प्राप्ति कैसे हो? पहली चीज, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं. देखिए बहुत पहले सोक्रेटिस ने कहा था, नॉलेज इज वर्च्यू. जिन व्यक्तियों को, पीपल हु एंजॉय एक्वायरिंग नॉलेज, इट बिकम्स इजी फॉर देम टू बिकम नॉलेजेबल. जो लोग समझते हैं ये किताब है और सर पे बोझ है, उनके लिए ज्ञान प्राप्ति में कठिनाई होगी. तो पहली चीज तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हैं. इन दिस केस, since you plan to appear in civil service exam, you have to enjoy learning, you have to enjoy acquisition of knowledge. Without that you will not be able to progress. And hence, when you select an optional paper for the civil service, you have to go for such paper which you like, enjoy, and you have already acquired some knowledge. So if you've done your BA or MA in a particular subject, just move should be to select that subject. Second, you have to select the right books, whether for general studies or for your optional paper. For selecting the right books, because there is so much information available, there are so many books available, that if you start reading everything, you will never be able to complete your preparations. And here, some guidance is helpful, some mentorship is helpful. I do not advocate coaching, I advocate guidance. You have to seek guidance from somebody who will be able to advise you that these books are better. So selection of the appropriate subject, selection of the right books, and then next step is working out a plan to study. आप लोग मालूम नहीं कितने लोग प्लान करते हैं, नहीं करते हैं. जब मैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बैठा था तो मैं हर दिन को प्लान करता था. सुबह कितने बजे उठूंगा, तो उसके बाद क्या पढ़ूंगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, ब्रेकफास्ट के बाद क्या पढ़ूंगा, कितनी देर आराम करूंगा, कितनी देर लंच करूंगा, कितनी देर वॉक करूंगा, कितनी देर फिर पढ़ूंगा. ये सब पूरा दिन में रहता था. मेरा आप सबसे सुझाव ये है कि you have to discipline yourself. If you are unable to discipline yourself, then there is trouble. Then don't take the civil service exam. You have to. How do you discipline yourself? First, write down your existing schedule. What do you do now? What time do you wake up? What do you do thereafter? How much time do you play? How much time do you watch TV? Then you will discover that you are wasting a lot of time. I think the biggest time waster is this. सबके पास है ना ये, क्या कहते हैं इसे, इडियट बॉक्स है ना सबके पास. सबसे ज्यादा टाइम आप इसमें वेस्ट करते हैं, जब से सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है ये, लेकिन वेस्ट करते हैं. हेलो, हाय, हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे, मौसम कैसा है, मौसम अच्छा है. कितना टाइम वेस्ट करते हैं आप इसमें. और आजकल तो नए नए चल गए हैं, वो इंस्टाग्राम चल गया है, कुछ चल गया है, उसमें छोटे छोटे गाने भी चलते रहते हैं. खूब टाइम वेस्ट. देखिए मैं अफोर्ड कर सकता हूं वेस्ट करना, मैंने अपने जीवन कर लिया, आपको आगे देखना है. तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग during the day, and you will discover you are wasting a lot of time. लोग कहते हैं मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है. अपने जीवन काल में मैं बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूं, कभी भी मुझे टाइम की कमी महसूस नहीं हुई, कभी भी. दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको एक आध. जैसे सुबह के टाइम पे किसी व्यक्ति को 1 कप चाय की जरूरत होती है दिन आराम करने के लिए, किसी को 3 कप चाय की जरूरत होती है दिन आराम करने के लिए. फिर उसके बाद चाय पीने के बाद जहां वो जाता है, कोई 5 मिनट में ही निवृत्त हो जाता है, कोई आधे घंटे बैठा रहता है वहां पर, है ना. सबका अलग अलग समय काल है. तो अपने जीवन को और दिनचर्या को ठीक बनाएंगे तो आप ये सब काम जल्दी कर सकेंगे. आपको फिर पढ़ने का या बात करने का टाइम मिलेगा. सो मेरा सुझाव आपसे ये है, वर्क आउट अ टाइम शेड्यूल फॉर ईच डे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
In order to work out the time schedule, you have to work out the schedule at this point in time and then see how much time you can spend. So for example, आप सब मैं कॉलेज में हैं, तो आप जब घर से कॉलेज के लिए आते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आता होगा, कोई साइकिल से आता होगा, कोई बस से आता होगा, कार से आता होगा, उस समय क्या करते हैं? क्या करते हैं? कितना टाइम वेस्ट करते हैं? आप देखते हैं इधर उधर, इन लोगों को देखते हैं, डे ड्रीम करते हैं। आप उस टाइम का उपयोग कर सकते हैं। आपके मित्र आपके साथ जा रहे हैं, उनसे कोई ऐसे विषय पर चर्चा कर सकते हैं जो आपके लिए, उनके लिए, दोनों के लिए लाभकारी हो। आप ऐश्वर्या राय को भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे टाइम पे अमिताभ बच्चन होते थे, उनको भी डिस्कस कर लेते थे हम लोग। लेकिन अब आप डिसाइड कीजिए क्या करना चाहते हैं डिस्कस करना। आजकल तो बहुत से रणबीर कपूर जने कितने कपूर चल गए हैं, है ना, बहुत सारे लोग चल गए। तो आप उनकी चर्चा कर सकते हैं या फिर आप ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। दोनों में आनंद आता है। आपको देखना पड़ेगा आप क्या करेंगे। तो उस खाली समय का उपयोग आप कैसे करें? First, you have to identify what that spare time is and then how to utilize that spare time. Once you have worked out your schedule, it could be possible that you are not able to follow that schedule strictly. So don't worry about it in the beginning. Gradually, you will start following. You can keep changing your schedule so that it adjusts to your requirement, your attitude, your work schedule, but you must get into a discipline of a day schedule. If you don't do that, you could be in trouble. Then, important point is, as you study, you must not try and learn everything. You must first understand and then learn. If you understand and learn, learning becomes easy. आप जब तक उस विषय की आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, और जानकारी करके, उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की जानकारी करके आप याद करेंगे, so chances are that you will remember it later on. But if you don't do that, सिर्फ रट लेने से आपका काम यूपीएससी में नहीं चलेगा। यूपीएससी के लिए आपको वो विषय को समझना पड़ेगा ठीक से, तब ये काम बनेगा। तो ये रही बात ज्ञान प्राप्ति की। मेरा एक और सुझाव है आपसे इसमें कि आप लोग यदि छोटे छोटे ग्रुप बना के, आजकल तो व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाते हैं, रोज वो ग्रुप एक किसी विषय पर चर्चा करें आधे घंटे 45 मिनट के लिए, तो सबका कहना, आप सोचिए आप लोग में से सब जने 2 या 3 साल बाद अपीयर होंगे। आप सोचिए रोज ग्रुप एक विषय पर चर्चा करता है, तो अगले 2 साल में आप 700 से अधिक विषयों पर चर्चा कर चुके होंगे। सामान्य साइकोलॉजी ये बताती है कि when you discuss something, the chances are that it will stick to your mind. Merely reading may not help. So आप दिन में जो पढ़ते हैं उसमें से कोई एक विषय पर अपने साथियों से कहिए आज शाम को इस पर चर्चा करेंगे। जब आप चर्चा करेंगे तो एक तो आपको क्लैरिटी आएगी उस विषय के बारे में, दूसरा आपको ये बात याद रहेगी। समझ रहे हैं इस बात को आप लोग? Do you understand this? Yes, sir. तुषार बहुत गंभीर लग रहे हैं और सुशांत उससे ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराइए, कोई नुकसान नहीं है। आप दिल्ली में हैं, थोड़ा मुस्कुराते रहिए, हंसते हंसते कीजिए कीज तो अच्छा रहेगा। आपको परेशान दिखेंगे तो आपको समझने में समस्या आएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं। As you over a period of time acquire and gain knowledge, it is very important for you to develop your communication skills. यानी कि संवाद, यानी कि आपका जो आप अभिव्यक्ति है वो ठीक है या नहीं। आप भी कभी कभी महसूस करते होंगे कि आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है लेकिन आप उसको बोल नहीं पा रहे, आपको शब्द नहीं मिल रहा बोलने के लिए। होता है ना ऐसा? आप धारा प्रवाह से अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है कि आपने अभ्यास नहीं किया। यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। सो लेट मी गिव यू अ regime which helped me, and I don't know whether you are aware, every year I guide about 150 persons who qualify for the IAS interview, and I guide them. And this is the drill that I suggest. Those of you who want to see the details can watch my YouTube speech. It is a video by Study IQ, and you can type my name. It is on how to improve your communication skills. मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। पहली चीज, आप सब कोई ना कोई अखबार पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं अमित? अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? Yes, sir. लेते हैं। अमित मैं आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल जमे हुए हैं एकदम। अमित को ऐसा लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में एकदम ठंड में बैठे हुए हैं एकदम। अच्छा, ओके, नहीं बोलने की जरूरत नहीं, आप गर्दन हिला दीजिए, उतना मुझे समझ के आप जीवित हैं, वरना आप बिल्कुल बुत बने बैठे रहेंगे, पता नहीं कि आप जीवित हैं क्या है, कैसे बैठे हैं वहां पर, है ना। तो सबसे पहले जो अखबार आप मंगाते हैं, ये डिसाइड कीजिए कि आप यू वांट टू अपीयर इन द सिविल सर्विस इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम और सम अदर मीडियम।
Okay, that's very important for you to understand. Once you decide upon the medium, because each language is good. Hindi बहुत अच्छी भाषा है. English is also very good language, so no discrimination. You have to decide which language you want to appear in the civil service exam. Once you decided that, then you have to think, eat, drink, sleep, write in that language. You have to start thinking in that language. सामान्य रूप से क्या होता है, क्योंकि हम सबकी मातृभाषा हिंदी है, हम सामान्य रूप से हिंदी में सोचते हैं, उसको मेंटली ट्रांसलेट करते हैं और फिर अंग्रेजी में बोलते हैं. ये सामान्य है, परेशान होने की बात नहीं है. अगर आप जो मैं बता रहा हूं आप करेंगे तो आपका ये परिवर्तित होगा. यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, और आप हिंदी में भी बिना निर्बाध रूप से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकेंगे. लेकिन इसमें अभ्यास करना पड़ेगा. अभ्यास में जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको शुरू में कठिनाई होगी. अगर आप कठिनाई छोड़ के भाग गए तो आप यूपीएससी का पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे. लेकिन आप लगे रहे तो धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आने लगेगा. कैसे आएगा? आप जिस भी अखबार को मंगाते हैं, अंग्रेजी हिंदी, उसका एडिटोरियल पेज खोलें. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडिटोरियल पेज? Yes, sir. Okay, so in that editorial page there are editorial articles. Okay, you pick up any one article and read it aloud in front of a mirror. I am repeating it. Open the editorial page, pick up an article and read it aloud in front of a mirror every day. If you don't do it every day, you are lost. Read it aloud. After you've read it aloud, initially you will have a problem because you have not been reading it aloud. So you will not be fluent in reading it. So don't worry. It comes over a period of time. दूसरी समस्या आएगी, आसपास के लोग आप पर हंसेंगे. ये क्या कर रहा है शीशे के सामने? अगर आप अंततः आप हंसना चाहते हैं तो आपको इस समय उनको हंसने देना है. उनकी चिंता नहीं करनी. आप पढ़ेंगे उसे जोड़ के. पढ़ने के बाद अखबार नीचे रख दीजिए और जो आपने पढ़ा है अपने शब्दों में उनको बोलिए. अंग्रेजी, हिंदी, जो भी आपकी भाषा है. You must read it out and then speak it out in your own words. Again, you will flounder. And you tape both. Tape the reading as well as speaking. Why? Because over a period of time, you can make out whether you are improving or not. I have held hundreds of people like you who improved their communication skills through this mechanism. I am repeating it. Read the editorial article aloud, put it down, and then speak it out in your own words in front of a mirror. This is the second step. Third step is, excuse me. Third step is, after you've read it, after you've spoken it, then write it down in your own words. There will be a lot of internal resistance to do this because it appears to be painful in the beginning. Friends, if you don't do that, your communication skills will not improve. You have to do this regular 1 month, 2 month, 1 year, 2 year, 3 year, continuously, and you'll see the improvement. Now, as you undertake these 3 exercises of reading, speaking, and writing, you will come across a number of words that you don't understand. You will come across a number of phrases that you don't understand. It is then that you should use this idiot box. Go to Google, uncle, type that word and you will get the details. And make a note of it. And revise it as you are. How do you revise? You revise it as you are traveling from one place to the other where you can't read. So if you're sitting in a bus or riding a bike or sitting in a car where you can't read, just mentally revise the difficult words that came to your mind. That is how you will learn. You will have to keep remembering those words as you are driving, at a time when you can't read, you can utilize that time in recalling that. This is a very important drill for the purpose of improving your communication skills. If you do that, the chances are that you will be able to do well in the civil service exam, where by reading what I am telling you, there will be 3 important things that will happen. Number 1, your diction will improve over a period of time. Number 2, your knowledge will improve. These articles are on current events. So every day, if you read one article for next 2 years, you will have more than 700 articles you would have read and you would have that knowledge. And third, most importantly, all these articles are written very logically. So you will gradually try and understand how to write once you read these logical articles. So 3 distinct advantages. There are other advantages also. But if you do all this, if you try and acquire knowledge, if you improve your communication skills, then the chances are that you'll make it. Now I have spoken for about 40 minutes. I will stop here because I would want to take questions from you if you have any, and I'd like to answer them. Okay, then over to you. Thank you very much. I hope what I have told you is beneficial to you.
in future. Thank you so much, Thank sir. you, We sir. couldn't expect more than this step of yours to encourage new aspirants with your guidance. We know you are a great and busy man, but we are grateful that you have spared time for us. We appreciate your time and advice that you have given to us today. We are definitely going to be very resilient after having you. It was such a great and interesting confab with you that we have witness today with you. So thank you so much, sir. Thank you so much. And now the platform is open to ask any queries. So if you have, you can do it now. So first of all, let me answer a question that is here in the chat box. Sir, how to manage with schedule? College Neha Bishla. Is that right? Neha, are you there? She's okay. Let me answer a question. She says yes, sir, but I can't see her on the screen. I don't know what is the reason why she's not here. But anyway, let me answer a question. She says, how do I manage the schedule? Don't worry, Neha. Your college is from 8:30 to 4:30 and travel time is 3 hours. How are you utilizing those 3 hours of travel? What do you do during that travel time? If you are traveling by bus, you can read in the bus. If you're traveling by metro, you can read in the metro. If you are traveling on a bicycle, then you can go along with a friend of yours and discuss a topic. It's all a question of how do you utilize your time. Neha, since I'm assuming you are doing your bachelor's right now, and you still have 2 years at least to go for the civil service exam. Don't worry too much about studying for 10 hours for UPSC. Right now, your focus should be, as I said, on improving your communication skills and your general awareness. For that, I think 3 to 4 hours are sufficient, which you will be able to find time. But nonetheless, Neha, let me tell you that you work out your schedule at length. What time do you get up? What do you do thereafter? How much time do you take to drive down or go to your college? What do you do in a college from 8:30 to 4:30? I'm certain you would not be attending classes right through. There would be free period. What do you do during that free period? All this you have to work out and you will be able to find answers, right? There are people who've raised their hands, so you can call out their names. Shreya Mishra, you can unmute yourself. I don't know how does this work. I know Zoom works, but Shreya Mishra can ask a question. Do you have a system of their coming here and asking? You can open your mic and ask your question if anyone have. Shreya Mishra, you can open your mic and ask your question. Are you there? Sir, I have a question. Okay, Anirudh, go ahead. You ask your question. Sir, I am from UP अम्बेडकर नगर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इतना पास है तो अपना पर्दा नशी क्यों है? आपकी शक्ल क्यों नहीं दिख रही मुझे? आप सॉरी मुझे सर, जानना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं अपनी। देखिए, आपने बाल नहीं काटे इसलिए आप नहीं आए। सॉरी सर, आपके कम से कम बाल है, मेरे तो बाल है भी नहीं, फिर भी मैं हूँ यहाँ पे। आप बाल होते हुए नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए, यस सर। हाँ सर बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम अभी शेड्यूल बनाते हैं और हमारा मतलब जो सेशन है वो भी लेट स्टार्ट हुआ है, तो मतलब कॉलेज के असाइनमेंट और कॉलेज के कोर पेपर्स, सर आई एम फ्रॉम पॉल साइंस ऑनर्स, तो मतलब इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है। फिर हम अपनी स्टडी है जो मतलब बेसिक्स नॉलेज है, मैं पीसीएम से हूँ 12th में, तो जो बेसिक्स नॉलेज है लाइक पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एंड मतलब जो बेसिक्स है वो नहीं पढ़ पाते, तो जैसे लगता कि कुछ नहीं पढ़े, फिर ये मैनेज नहीं हो पाता है। अच्छा, ये इनके प्रश्न का उत्तर आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास इंटर में पीसीएम था, मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया, मैं सिविल सर्विस में बैठा, तो मैं आपसे यही बता सकता हूं जो मैंने किया वो आप कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो मैंने क्योंकि पीसीएम किया है और मैंने भी पॉलिटिकल साइंस किया है, तो मुझे पता है कितना समय लगता है, उसके बाद भी बहुत समय बचता है। ये आप ढूंढ नहीं पा रहे अपने बचे हुए समय को। पहली चीज तो आप अपने अंदर ये करेज कीजिए कि जिससे बात करें उसको अपनी शक्ल दिखाइए, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरा खोलने की, तो आप पढ़िएगा कैसे? तो पहली चीज, एक एक करके कदम उठाइए। सबको मैं बता रहा हूं, ये आप ऐसा नहीं हो कि आज मेरे हिसाब से चर्चा हुई, कल से आप जो है परिपक्व हो गए, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। आप पहले शेड्यूल ये देखिए कि वर्तमान में आप क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद कितने कप चाय पीते हैं वहां जाने के लिए अंदर, और अंदर कितनी देर बैठते हैं, उसके बाद आते हैं। उसके बाद आप जब कॉलेज में जाते हैं तो कितनी देर बिजी रहते हैं, क्या आप लगातार आपके पीरियड्स रहते हैं? जब पीरियड्स खाली होते हैं उस समय आप क्या करते हैं? फिर वापस आते हैं जब कॉलेज से, तब आप क्या करते हैं? आप इस अभी यूपीएससी की चिंता ना कीजिए, अपने को डिसिप्लिन कीजिए पहले। तो जो आपको कॉलेज में काम मिल रहा है उन्हीं को अच्छा करने का प्रयास कीजिए, तो आपको अच्छा करने की आदत पड़ जाएगी।
यूपीएससी के लिए अलग से आप अच्छा थोड़ी ना कर पाएंगे अगर आप सामान्य रूप से अच्छा नहीं करते। आप सामान्य रूप से जो कार्य कर रहे हैं उसको छोड़कर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरह करें, उससे आपकी अच्छी तरह करने की आदत पड़ेगी। आप अभी वो कीजिए, आप यूपीएससी की चिंता ना कीजिए। पहले आप जो सामान्य रूप से जो कर रहे हैं सबके लिए है, उसको ठीक से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है अनुरुद्ध? यस सर, थैंक यू सर। और वन मोर क्वेश्चन दैट कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एडिटोरियल पेज, तो मतलब कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे उसे पढ़ने का मन नहीं करता, बोरियत सा लगता है, तो फिर उस समय क्या करें? और फिर मतलब पढ़ते हैं तो ये नहीं पता कर पाते कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अभी से हमारी इंपॉर्टेंट चक्कर में ना पढ़िए, आप पहले से रूटीन कीजिए, रोज पढ़िए उसको। आपका मीडियम अंग्रेजी है हिंदी है? इंग्लिश मीडियम से। तो आप मुझसे पूरी चर्चा हिंदी में क्यों कर रहे हैं? ओ सॉरी सर। आप इसके लिए तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, टाइम की कमी नहीं है ना इसके लिए। नो इसके लिए सर, भी टाइम की कमी है क्योंकि नो आपको सर, पीसीएम से आप पॉलिटिकल साइंस में हैं, इसलिए आप हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। नो सर, नो सर। So, and this is addressed to all of you. Please try and do what you can before getting worried about what you aren't. आप उन चीजों के लिए परेशान है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आप कर सकते हैं उसके लिए परेशान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? You should have the courage to speak in English. And if you feel ashamed that you can't speak good English, then do what I'm telling you. You read those editorial articles aloud. That should be a motivation that you should be able to speak fluently. If you follow that drill, you will not find it boring because you have an objective in mind Yes, sir. to improve your articulation. You do that. Yes, sir, yes. इस पे कितना टाइम लगाते हैं? Sir, not much. I am not any social media, so that. चलिए चलिए, लेकिन सोशल रहिए, मीडिया पे ना रहिए, कोई बात नहीं है। Yes, sir, yes, मत sir. हो जाइएगा। हाँ चलिए। सर मुझे एक क्वेश्चन है जी। My question is regarding the interview. Sir, if during the graduation we have a subject, but we are not taking that up in the optional, so that in my opinion, it sends a wrong message to the board. Maybe that why did you take that subject in the graduation? Gurumita, have you qualified for the interview? No, sir. Why are you worried? See, again, you are getting worried over issues which will come later. I'll tell you. I will guide you when you qualify. I am today guiding 183 students who qualified, and I'll give you the appropriate answer for the question that you are asking. Gurumita, be clear in your mind. Focus on the present and do take the first step. First, work towards preliminary and main. Once you clear that, I'll answer all your questions regarding. Don't worry about it. Don't worry about interview. You can even ask me a question. सब जब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाऊंगी, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगी, तो मैं कैसे करूंगी? जब आप बनेगी तो मैं समझा दूंगा। अभी चिंता ना कीजिए. Don't worry about issues which are far distant. Because but like while preparation, I will be. You prepare what you like. You prepare. Forget about what is going to be asked in the interview. Just forget about it. Focus totally on what you got to do in the next step. Period. Okay. Prepare your. Don't worry about interview. I mean, I have guided interview because I have had personal experience. In the first year, I got 55% in interview and qualified for the police service. In the second year, I got 80% in the interview, which was the highest in the country. And I'll tell you how to get that in 1 year. आप अभी से क्यों परेशान हो रही हैं? बता दूंगा मैं आपको कैसे नंबर मिलेगा. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Right. Is there any other question? Sir, can I ask another question? Yes, yes, Gurmita. So while the preparation, while you are preparing, sometimes we are not sure if we're going in the right direction. Without any guidance, how can we make sure that, like, how can we, in our mind, be sure that we are on the right path? Gurmita, that is why I keep suggesting that not as much coaching. You have to have guidance. You have to get hold of somebody who's appeared in the civil service exam, who's able to guide you. Or like I'm associated with an organization called Study IQ. They don't charge much, but they have a very interesting system of appointing mentors. Those mentors are actually guiding students as to what they should read. They're not so much into teaching, but guiding. And I have believed that guidance is much more important. They are able to guide you as to which books you should read, what you should leave, what you should focus on. That's more important than, teaching, because learning will come on your own, provided you're on the right track. And that track is guided by either a guide or a mentor or whoever, whatever. Good morning, sir. Good morning. Sir, this is Sridhar. Last, sir, I am having interview this year, which will be probably scheduled in April.
So last year also I have given Indian Forest Services interview. Sir, I performed severely poor there. I managed to secure just 153 out of 300. Sir, kindly give us some points how to secure well in interview. Okay, Shlok, you'll have to come to me separately. Yes, sir. I will provide my mobile number here. You message sir. me. Yes, sir. You message me on this number. WhatsApp message me on this number, and I Sure. will associate you with a group that will be able to help you. Right? Sure, sir. Others, if any one of you have qualified for the for the interview this year, I have given my mobile number. You can message me, and I will try and guide you for that interview. And this is an open offer to everyone, anyone who qualifies in the future also. I do that every year, and I will be able to do that. So there is a question by the Arts Corp. I don't know. I'm Shivanshu. Okay. Sir, I am BSc Maths Honors first year. Please tell me what is correct way to start my preparation of UPSC. Now, this applies to every one of you who's right now in the first year. The assumption, therefore, is that you're not going to appear in next 2 years. The earliest that you're going to appear in 2025. If that be the case, my suggestion to all of you is improve your communication skills. I keep repeating that. It will give you enormous amount of confidence. It will improve your understanding, and the same thing for which you find a lot of time to learn, you learn it much faster. So please, all of you, focus on improving your communication skills. Those that have listened to me properly, they will understand that. But if you haven't, there is a video on YouTube of mine. You can go there, type my name, and just write communication skills. You will go to a 6-minute video that will guide you on how to improve your communication skills. Sir. Yes, Tushar? Am I audible, sir? Be slightly louder. Okay. ये आपने कान में नए गैजेट लगा रखे हैं, उससे सब गड़बड़ है. सीधे उसको निकालिए, सीधे बोलिए. Sir, now I am audible, sir? Yes, you are audible. Sir, there is a many distractions like outing with friends, and there is so much content on YouTube for entertaining like comedy videos. हम उन सब में अपना बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं, तो ये सब हमारे distractions बन चुके हैं. तो हम इनको कैसे avoid करें? मेरा सही तो अब आप ही करिए, या तो अपना जीवन के साथ मजाक कीजिए, मजाक देखिए. तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपने अपनी आदत कैसे पाली? अब आपको वो इतना अच्छा लग रहा है, एक तरीका बता सकता हूँ. देखिए, अपनी आदत को चेंज कैसे करें, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ. कोई भी आदत है, उसको चेंज कैसे करें. किसी भी आदत को चेंज करने के लिए आप एक नई आदत पालेंगे, और उस नई आदत को कैसे पालेंगे? ऐसे पालेंगे कि जो आपको चीज अच्छी लगती है उसके साथ एसोसिएट कीजिए. उदाहरण के लिए, जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने लॉ एक सब्जेक्ट लिया था. मुझे बहुत सारे केस स्टडीज याद करने थे, 700 केस स्टडी याद करने थे. तो मैंने किसी से पूछा, यार ये कैसे याद करूं? बोले सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, सुबह उठो, याद कर लो. अब मैं देर से उठता था. तुषार, आप भी देर से ही उठते हैं, मुझे लगता है आपको देख के. ये जल्दी उठते हैं? Yes sir, मैं 6 PM उठ जाता हूँ. अरे बहुत, 6 PM पे उठते हैं तो बहुत लेट. 6 AM, sorry अच्छा, sir, तब ठीक है. तो मैं देर से उठता था. तो मैंने उसको परिवर्तित कैसे किया अपनी आदत को देर से उठने की? देखिए, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है, आप सब लोगों को भी होगा. हमारे टाइम पे टेस्ट मैच होते थे, और इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी. तो ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच है सुबह 5:30 बजे शुरू होता. मैं बिल्कुल पागल था क्रिकेट के लिए, अभी भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता. तो मैंने क्या किया कि मैंने उससे एसोसिएट किया अपने आप को. सुबह मैं 5:30 बजे उठता था और कमेंट्री सुनता था. उस दिनों टीवी तो होता नहीं था, कमेंट्री सुनता था. 25 दिन को चला, मतलब 5 दिन का एक टेस्ट मैच था, 5 टेस्ट मैचेस थे. 25 दिन में सुबह 5:30 बजे उठा, और मेरी आदत पड़ गई सुबह उठने की. तो मैंने उस आदत को एसोसिएट किया ऐसी चीज को जो मैं लाइक करता हूं. आज आप जैसे लोगों से मैं कहता हूं, ऐसी गर्लफ्रेंड आप लीजिए जो सुबह 5:30 बजे आपको फोन करे, आप अपने आप उठ जाएंगे. तो आप अपने किसी, और आप लोग मुस्कुरा रही हैं, आप ऐसा कोई बॉयफ्रेंड ले लीजिए जो फोन करे 5:30 बजे, व्हाट्सएप मैसेज करे, आप जरूर जो है जगेंगे कि नहीं जगेंगे. तो आपको अपना चेंज जो है ऐसी चीज से एसोसिएट करना जो आप लाइक करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आपको मजाक अच्छा लगता है ना. अब इसके अलावा मुझे आपके बारे में पता नहीं आपको और चीजें क्या अच्छी लगती है, उससे कैसे एसोसिएट करें आप कि आपको, जैसे कई लोगों को डिस्कशन अच्छा लगता है,
तो आप डिस्कशन देखिए उस टॉपिक पर। तो जब आपको जानकारी होगी, ज्ञान होगी, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। अरे वाह, कई लोगों को होता है कि जब जानकारी मिलती है तो अच्छा सा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। जब कोई नई चीज मालूम पड़ती है अच्छा लगता है ना, कोई भी नई चीज, ये स्वाभाविक है। तो आप उस नई चीज की जानकारी में लग जाइए, तो आपको धीरे धीरे आप डाइवर्ट होंगे। ये ऐसा नहीं हो कि आज मुझसे चर्चा हुई कल चेंज हो जाएगा, ठीक है। Okay, so this was the last question. Thank you everyone for asking the questions, and we have now come to an end to this round. And now I would like to request Rashmi ma'am to kindly give vote of thanks. Thank you, Ashi. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay. A very warm and graceful morning, respected sir. We are very honored and pleased to have you here. It's my privilege to propose a vote of thanks. I would like to thank you for this event. You have shared your insightful knowledge and wisdom with us. I'm sure in your guidance, all the students and all the participants who have joined us today, they will get the very well. They will get all the help from you, and your session will be very fruitful to all the participants who have joined us today. And I also want to thank my gratitude to our principal sir, Professor Shiv Kumar Sade. I would also like to thank you, our convener, Dr. Darshan Malik sir, and our program coordinator, Hemant Lamba sir. I would like to thank you all the participants and the team of Disha who managed to organize this event very nicely. And I also want to thank you all the participants, students who have joined us today. Thank you so much, sir. Thank you all. Thank you, and God bless you. Keep smiling and keep working Thank hard. you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now you all may can leave, and yeah, the feedback form will be shared in your respective groups, so kindly fill that as well. Thank you so much for everyone.